Hello class 3 students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine and आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे हो. So, मैम कब आती हैं? जब हमने क्या पढ़ना होता है? EVS. So, हम सब क्या करेंगे? We are going to take out our textbooks from the bag and keep it on the desk. Alright? Okay, done. So, by this time we know that the name of our textbook is Green Planet, a book of environmental studies. अभी बुक ओपन नहीं करनी, अभी बुक को सिर्फ डेस्क पे रखो. Done? Great. So, previous class में chapter 6 में we read something about animals. In fact, we read a lot about animals, right? So, we read how animals are categorized. So, you have some wild animals, domestic animals, farm animals, and where do animals live? We spoke about their habitat. So जब हम plants की या animals की बात करते हैं, they all are a part of nature. मैम ने last time भी बताया था, nature को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति. So nature is something which is not created by man. Right? So जब हमने animals के बारे में पढ़ा, जब we read about how do we categorize them, उनकी importance क्या है, what is their habitat, what are their homes called. So do you think we read everything about animals? No. We have to talk about another category of nature when we talk about wildlife, that is birds and insects. When we talk about birds हम सबको पता है क्या होता है, right? There are different types of birds. There's parrot, there's sparrow, eagle, vulture. So many birds are there all across the globe. Then we talk about insects. Insects you generally find crawling on the floor. So now you would think that ma'am, हमें birds और insects के बारे में क्या knowledge होनी चाहिए? That's exactly what we are going to study in chapter number 7 of your textbook, and all of you will open up chapter number 7. And before that, can you see this is a zoo? So you can see a bird here, right? So, chapter number 7, which is on page number 39. Quickly open up this chapter. Done? What is the name of the chapter? The name of the chapter is Knowing About Birds and Insects. Okay, so हम चिड़िया जो होती हैं, बहुत सारी, उनके बारे में पढ़ेंगे and about the little insects that we see crawling on the ground on the floor. Now, in the beginning of the chapter, like all the other chapters, there is a small activity which is given. It says, discuss the answers for the following questions. So, आपको कुछ questions दिए गए हैं, आपको इनके answers discuss करने हैं. All right? It says, are they small or big animals? If you look at this, maybe some of them are small, some of them are big. How many legs do they have? So if you look at them, a few of them have 1, 2, 3, 4, 5, 6 legs. Some have 2. So there is a variation in the number of legs that they have.
Which of them have wings and can fly? So, owl has it, crow has it. So, other birds also have, but हम chapter में ये भी पढ़ेंगे that there are some birds which cannot fly very high. Which of them can bite? Probably a hen can bite you, or an insect can also bite you. Okay? Now, let us start reading this chapter. So it says, the earth is home to countless birds and insects. Countless का मतलब क्या होता है? Something that cannot be counted. आप अपनी फिंगर्स पे नहीं गिन सकते हो. आप अपनी फिंगर्स पे गिन सकते हो कितनी बर्ड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और प्लैनेट अर्थ? कितने इंसेक्ट्स हैं? नो. लाइक what else is countless? The stars, the hair on your head, all these are countless. So the birds and the insects are also countless. We see them all around us. Kabhi early morning utho, so you will hear the beautiful chirping of birds. Such as in the sky. So where all do we see these birds? In the sky, in the trees, in backyards, or in window sills. So these are the common places where you would find birds as well as insects, right? Moving on. Parrots, sparrows, crow, pigeons, peacock, duck, etc. are the birds. So आपको यहाँ पे कुछ birds के नाम दिए गए हैं. Mosquitoes, houseflies, cockroaches, ants, etc. are the example of insects. So आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स. सो ये सारे नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द ब्यूटिफुल बर्ड्स. Knowing about birds, they have feathers which are made of keratin. What is keratin? It means something which is very, very smooth to touch. Bird का feather touch करा है कभी? कितना smooth होता है ना? A bird's wings have the same bones. Very important line. A bird's wings have the same bones as that of human arms, but they are arranged differently. Arranged differently क्यों है? या हमें कैसे पता है arranged differently है? Arranged differently है तभी तो birds उड़ सकती है, but can we humans fly? No. All right. Some of the bones in a bird skeleton are hollow. This makes the bird light enough to fly. तो अब समझ आया डिफरेंस. हमारी जो सारी बोन्स है दे आर नॉट हॉलो, पर जो बर्ड स्केलेटन की बोन्स होती हैं, शोल्डर बोन्स बेसिकली, दे आर हॉलो. सो उसमें द अरेंजमेंट इज सच दैट द बर्ड कैन फ्लाई. Moving on. Knowing about various types of birds. Okay.
we see various types of birds at different places. Isn't that correct? आप हर जगह different type of bird देखते हो. ऐसा होता है कभी कि सारी जगहों पर एक ही टाइप की बर्ड दिखे, हर जगह आपको क्रो दिखे, हर जगह आपको पिजन दिखे, ऐसे तो नहीं होता ना. डिफरेंट प्लेसेस में आपको डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स दिखती हैं. Some birds are large. You remember हमने पढ़ा है जैसे plants और animals के बारे में that they vary in size, in shape. That is exactly the case with the birds as well as with the insects. So basically अगर आप देखो that nature की बनाई हुई जो चीजें हैं, even we human beings, are all of us the same? No. So things which are created by nature, इन सब में कॉमन फीचर क्या है? दैट दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्या क्रो और स्पैरो एक जैसे दिखते हैं? नहीं. क्या पीकॉक और डक एक जैसे दिखते हैं? नहीं. सो things created by nature will always be different from each other in terms of size, shape and color. All right. So some birds are large while some are small. Hummingbirds are the smallest birds while ostriches are the biggest. So let me just show you this photo. So you see this bird here? This is an ostrich. Alright, it is the largest bird and strongest as well. Various birds eat different things. Some feed on plants, some eat insects, others eat other animals like fish. जैसे falcon जो fish होती है, वो fish नदी से निकाल के खाती है. Alright, या फिर vulture या ईगल या हाइना, ये वाली जो बर्ड्स होती है, दे ईट फ्लैश, द रिमेनिंग फ्लैश. राइट. देन देयर आर सम बर्ड्स व्हिच ईट प्लांट्स, snakes, etc. Now let us read about different types of birds in detail. All right. So first we are going to talk about a parrot. Parrot, इसके क्या फीचर्स हैं? A parrot has green feathers and a curved red beak. जो पैरट होता है उसकी बीक कर्व्ड होती है, इस तरीके की बीक होती है ना पैरट की. पैरट की बीक ऐसे देखिए कभी? नहीं, हमेशा पैरट की जो बीक होगी वो कर्व्ड होती है, like this. Curved means like this. Okay? And so देखो मैम जो important features, जो words हमें important features बता रहे हैं birds के, उसको underline करती जा रही है. Make sure you also do it simultaneously. इससे क्या होगा बेटा? आप खुद ही अंडरलाइन करोगे तो जब आपको नोट मेकिंग खुद से अगर करना होगा, इट विल बिकम इजी फॉर यू. लेट्स कंटिन्यू. सो पैरट हैज ग्रीन फेदर्स एंड अ कर्व्ड बीक. इट ईट्स चिलीज फॉन्डली. कहते हैं ना जो पैरट होता है उसको मिर्ची खिलानी चाहिए. It can be taught to copy what we say. So I remember I had a friend who had a parrot in her house, and we still remember, when we used to go to her place and we used to wish her mother that, hello auntie. So the parrot would also say, hello auntie, So this is the quality, or this is a distinguishing feature, or this is the talent also you can say of a parrot. Then we talk about sparrows. These are the most common birds that we see. Sparrows are small, chubby. Okay, you will never see a very weak sparrow.
chubby brown gray birds with short tails. देखो पैरट की टेल लंबी है और स्पैरो की जो टेल होती है वो बहुत छोटी सी होती है. They have short and blunt yet powerful beaks. बहुत तेज धरार जैसे होता है ना, वैसे इनकी बीक्स होती स्मॉल है साइज में, बट दे आर वेरी शार्प. They eat seeds but can also eat insects. All right. Now we talk about crow. Crow is generally black in color. It has a black beak and legs. It caws loudly to warn its companions of danger. कौ कौ जो कौवा आवाज निकालता है ना, उसको कहते हैं cawing or caws. It is commonly seen everywhere. Now we talk about a pigeon. The pigeon or a pigeon has grey, black or brown feathers and pink claws. आपको कोई pigeon ध्यान से दिखे तो उसके आप claws देखना, पंजे देखना. They are in very light baby pink color. Okay. Pigeons gather in groups on our windowsills or balconies. They are domestic, chubby bodies, birds with short necks and short, slender bills. Now we talk about the national bird of our country, which is a peacock. Peacock has green and blue feathers. It has a fan-shaped crest on the head. देखा है कभी पिजन के सर पे ऐसे एक चीज, that's a fan-shaped crest. When it rains, the male peacock dances, displaying its unusually beautiful feathers. आपने कभी पीकॉक को देखा अपने feathers खोले हुए? It's a beautiful view. It is our national bird. Moving on. How do birds fly? तो अभी तक तो हमने अलग अलग birds के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे how do they fly. So एक phenomena हमने पढ़ लिया that they have hollow bones. We often see birds flying high in the sky. They fly by flapping their wings. ऐसे ऐसे bird करती है और जब वो काफी ऊपर पहुंच जाती है तब वो अपने wings को ऐसे straight कर लेती है. Otherwise, first it has to flap its wings. So why does it do that? Because flapping of wings, it creates a pressure जो उस bird को ऊपर पहुंचाता है. They fly by flapping their wings and using pressure to create lift under the wind under their wings, just like airplanes do. Feathers are important to birds because they keep them warm, help to fly and provide a mask. A bird can also cover itself like this with its wing. Okay. Then we talk about the beaks. जैसे अभी हमने पढ़ा. Birds cannot bite or chew their food because they have no teeth. So what do? They have different kinds of beaks. Flesh-eating birds such as an eagle or a vulture, they have a strong sharp beak shaped like a hook. ये देखो कैसे, जैसे पैरट की तो ऐसे होती है और वल्चर जो होती है उसकी बीक ऐसे होती है. थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा है? सो दिस पोर्शन इज लाइक अ हुक. ओके. Seed eating birds such as pigeon, they have short pointed strong beak. So वो क्या होता है, वो सीड को ऐसे क्रैक कर लेते हैं अपनी बीक से. Parrot, it eats
seeds, nuts and fruits. We already studied it has a strong curved beak which it uses to crack the nuts and seeds. A woodpecker. Can you see this woodpecker? It has a long beak like this. क्यों? ये जो woodpecker होती है, ये अपना घर देखो कैसे बना रही है. इसने यहाँ पर नेस्ट बना रखा है. कैसे? ये एक पूरे पेड़ में इतना बड़ा होल कर लेती है just using its beak. So क्या होता है? wood पे ऐसे टक 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 with its beak it makes the hole in the tree. A duck has broad flat beak with holes on its side. It takes muddy water in its beak. Mud and water flow out through the holes. Plants and insects remain in the mouth and are eaten. Okay? Knowing about nesting of birds. Nest कैसे बनाते हैं? Birds build nest when they lay their eggs and raise their nestlings, that is their babies. Birds use twigs, twine, wool, cotton and dry grass. ये आपको पता होने चाहिए. Twigs, twine, wool, cotton, dry grass to build the nest. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया. A sparrow wants to build its nest. What all material will it use? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? What will you write? A sparrow or a bird will use the following material to build its nest. Twigs, dry grass, wool, twine and cotton. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? This is what you will write in the answer. Okay? Now, some birds build their nest on trees and on the ground also. An eagle's nest is high up on the tree. बहुत ऊंचा होता है ईगल का नेस्ट. टेलर बर्ड जो होती है वो उसको टेलर बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लीव्स इकट्ठी करती है. बहुत सारी ऐसे लीव्स इकट्ठी करती है. 1 सेकेंड. जो टेलर बर्ड होती है ना बेटा वो क्या करती है? ऐसे बहुत सारी लीव्स इकट्ठी करती है. ओके, लाइक दिस. और अपना एक ब्यूटीफुल सा नेस्ट बना लेती है. और उसको टेलर बर्ड क्यों कहते हैं? जितनी परफेक्शन से टेलर हमारे कपड़े सिलते हैं ना उतनी परफेक्शन से ये टेलर बर्ड लीव्स को इकट्ठा करके इनको जोड़कर अपना नेस्ट बनाती है. A woodpecker cuts a hole in the trunk. This I have already told you. Duck makes its nest on the ground. Duck के जो eggs होंगे वो हमेशा आपको जमीन पर मिलेंगे या पानी के किनारे मिलेंगे. A peacock builds nest amidst tall grasses on the ground. So peacock जो है उसका नेस्ट आपको कैसी जगह पर मिलेगा? जहां पर ऐसे tall grass होगी ना वहीं पर आपको ऐसे इस तरीके की टॉल ग्रास होगी, वहां पर आपको पीकॉक का नेस्ट मिलेगा. बट प्लीज बेटा वन रिक्वेस्ट दैट आई वांट टू मेक टू ऑल ऑफ यू. आपको कभी कोई बर्ड का नेस्ट दिखता है, प्लीज डू नॉट ब्रेक इट. वो किसी का घर है, राइट? लाइक वी लिव इन कॉन्क्रीट हाउसेस. वैसे ही जो बर्ड्स होती हैं उनका घर क्या है? दिस nest only. So do not destroy their homes. So ये तो हुई birds की बात. तो birds के बारे में हमने मेजरली क्या क्या पढ़ा है? आज हमने birds के बारे में we have read about their beaks,
their nest, their eating habits, and of course, how do they fly? Hollow bones, right? And flapping of wings. ठीक है ना? ओके, सो ये तो हुई बर्ड्स की बात. Now let us come to the second topic of our chapter, which is insects. So insects are small animals and they are also countless. Birds की तरह वो भी countless होते हैं. Generally इनके 6 legs होते हैं, do not have a backbone and their bodies have hard covering. देखो जितने भी important words हैं मैम सबको underline कर रही है. They feel and smell with feelers, that is sense organs of insects. जैसे हम smell nose से करते हैं, skin से feel करते हैं, तो insects के पास क्या होते हैं? Feelers. Most of them have wings and can fly, like a cockroach can fly, a butterfly. All right. आपको examples दिए गए, butterfly, mosquito, honeybee, housefly. But some of them do not have wings. So, like a creep, call, slide. ठीक है? Okay. So, these are the pictures of certain insects. Earthworm की अब बात की गई है. Alright. Earthworm has a long soft body. आप earthworm को अगर हाथ में पकड़ोगे तो फिसल जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि उसकी बहुत स्लिपरी सी बॉडी होती है. Divided into many segments. तो जैसे अगर मान लो ये earthworm है ना बेटा, तो इसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे मार्क्स होंगे. Alright, clear? Then each segment consists of a pair of legs that helps it to walk or swim. Then we talk about beetles. They are brown and black in color. Their front wings changes into hard shell to protect the back wings. Then you have ladybirds. They are the good examples of beetles. They are better known as farmer's friend because they eat aphids that destroy the crops. So, ये farmer के लिए helpful होते हैं. Then flyers and jumpers. Insect की एक और category है flyers और jumpers. Butterflies, moths and dragonfly. So can you see this dragonfly, butterfly we all know, and this is a moth. Alright. They are known as flying insects. इन तीनों को क्या बोला जाता है? Flying insects. Okay. Dragonflies catch and eat other insects in midair by stretching their thin legs. Butterflies during the daytime and moths at night. Butterfly आपको दिन में दिखेगी, moth आपको generally रात में दिखते हैं. Moths have thicker bodies, butterflies have thinner body. Then we talk about grasshopper and cricket. They are known as jumpers. ये आपको ऐसे frog की तरह कूदते हुए दिखेंगे mostly. ठीक है? And they make a chirping sound by rubbing their hind legs. ये जो इनके legs होते हैं ना ऐसी shape में, इसको hind legs कहते हैं, bent type legs. They are part of the same family. जैसे wild animals, right? वैसे ही insects में jumpers में कौन आ गया? Grasshopper और cricket. Crickets come out at night while grasshoppers are seen during the day. Social insects. Many insects exhibit social behavior such as aggregating in large number at times. Right? जैसे कि social behavior मतलब एक ऐसा behavior जो society में लोगों को लोग दिखाते हैं, जिससे society में peace रहे.
एंड्स देखे आपको कभी एक अकेला एंट नहीं दिखेगा, एंड्स आपको हमेशा ग्रुप्स में चलते हुए दिखेंगे। यूनिटी रिफ्लेक्ट करते हैं एंड्स, बीज ऑल्सो, राइट। एंड बीज जो होती है या एंड्स, दे हैव अ क्वीन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज द ओनली वन हु ले एग्स। So this was about birds and insects. अब आपने इसको रिवाइज कैसे करना है, जिस तरीके से मैम ने इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, इनको यूज करते हुए ट्राई एंड मेक योर ओन स्मॉल नोट्स। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, bye bye.